अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सबको एक और लेसन में खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 5वां लेसन है और आज हम पढ़ते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक और आजमाइश के बारे में। ये इसी सख्त आजमाइश थी और सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आजमाइश नहीं थी बल्कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी टेस्ट किया जा रहा था। So today we're going to learn about Hazrat Ibrahim alayhi salam's test, and he went through so many tests, and this is just one of them. Okay, and we're going to learn about that. And this wasn't just a test for Hazrat Ibrahim alayhi salam; it was also a test of Hazrat Ismail alayhi salam. And because they passed that test, we till today remember that test, and it's become part of a Hajj ritual. And those who don't go on Hajj, who haven't been on Hajj, they also celebrate and show their trust in Allah through this action. Can you tell me, think about it, what action do you think that is? And what trial are we remembering? And what lesson is there in it for us? So come on, let's start then. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Okay, so we learned in our second lesson about Hazrat Ibrahim alayhi salam and the story of Zamzam. Remember, Hazrat Ibrahim alayhi salam had a revelation from Allah subhanahu wa ta'ala where Allah subhanahu wa ta'ala told him to leave Hazrat Hajar and her baby son Ismail in the valley of Makkah. वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़कर आए मक्का में अपने बीवी को और बच्चे को जो बेबी था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इनको छोड़कर आए और वहाँ एक दुआ की थी। और वो दुआ क्या थी कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगा. I'm just going to tell you the rough translation of it, of what Hazrat Ibrahim alayhi asked Allah subhanahu wa ta'ala for, which was that, "Oh Allah, I am leaving my wife and my child here and in this barren land, make it prosperous and grant them sustenance with fruits and make it a place where people will establish the prayer so that they may be grateful, may be thankful, so they thank Allah. They remember that it's Allah that gives all the blessings." So Ibrahim alayhi salam chhodkar chale gaye. Ibrahim alayhi salam left his wife and child. Now after few years, roughly around when Ismail alayhi salam was about 10 years old, 10 साल के थे हज़रत इस्माइल alayhi salam, तब हज़रत इब्राहिम alayhi salam वापस आए और देखा कि मेरा बेटा जो है वो कितना माशाल्लाह से बड़ा हो गया है और हेल्दी भी है माशाल्लाह से, और अल्लाह का बंदा में शुमार होता है, वह अल्लाह पर तवक्कुल करता है. तो वहाँ दिन गुजारे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने. He stayed there and he spent time with Hazrat Ibrahim alayhi, and this was when Hazrat Ibrahim alayhi and Hazrat Ismail alayhi built the Kaaba as well. Now, when Ibrahim alayhi slept one night, he had a dream. Hazrat Ibrahim alayhi एक ख्वाब देखते हैं. वो ख्वाब में क्या देखते हैं? What does he see in that dream? He sees that he's slaughtering Hazrat Ismail alayhi salam. He gets really worried and he thinks it's from shaitan and he forgets about it. He doesn't act upon it. But then he has the same dream again another night and then the third night. So for 3 nights he has this dream. And then he realizes that this dream is from Allah subhanahu wa ta'ala, which is a revelation, and he must act upon it. So he goes to Hazrat Ismail alayhi salam. वो जाते हैं हज़रत इस्माइल alayhi salam के पास और कहते हैं कि मैंने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब में मैं आपको, मेरे बेटे, मैं आपको ज़बह कर रहा हूँ. I am slaughtering you. What do you think about this? Now what do you think? आपका क्या ख्याल है कि इस्माइल अलैहि सलाम ने क्या जवाब दिया? अगर आप इस जगह पे होते,
आप इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे होते और आपके अब्बू आपसे कहते हैं कि मैंने एक ख्वाब देखा है, तो आपका क्या रवैया होता? आप क्या जवाब देते? कैसे रिस्पॉन्ड करते? हम ज़रा इस पर सोचते हैं। हमें तो इस तरह के कोई ख्वाब नहीं आते, और ये ख्वाब सिर्फ पैगंबर को आते हैं, क्योंकि इसमें अल्लाह ने इनको एक बात सिखानी होती है दूसरे लोगों के लिए। ठीक है, तो ये जो नबियों की ख्वाब जो होते हैं वो हकीकत होते हैं। ठीक है, अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे से कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा है, तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को आप देखिए, just look at the response that Hazrat Ismail alayhi salam gave his father. He said, do what you will find me of the patient. You will find me that I am patient, inshallah. And when Hazrat Ibrahim alayhi salam, so Ibrahim alayhi salam said, फिर जब वो इसके साथ कोशिश करने के काबिल उम्र को पहुंच गया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूँ। अब तू देख कि तेरी क्या राय है। बेटे ने कहा, ए मेरे बाप, आप वही करें जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। इंशाअल्लाह अनकरीब आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। Now this is such a beautiful response that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned it in the Quran in Surah Safat ayat number 102. So make sure you do look out for it when you're reciting the Quran, and ponder upon it, reflect upon it, because there's lessons in there for us. Okay, so now Hazrat Ismail alayhi salam has told Ibrahim alayhi salam, okay father, you can do what you want. Now Hazrat Ibrahim alayhi salam, Hazrat Ismail alayhi salam started walking into, wanted to take him away from where the Kaaba was, and they traveled up to Mina. Now here, on the way to Mina, what happened? You know what happened? Shaitan came in the way. Shaitan doesn't want us to follow Allah's commands, does he? Shaitan तो नहीं चाहता कि हम अल्लाह की कोई बात सुने। तो उसने क्या किया, एक जगह पे आया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाला. He whispered into Hazrat Ibrahim alayhi's heart that how can you do this? He's your son. So what Ibrahim alayhi did, that where on the location of where he had these whisperings of shaitan, जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा आया था, he threw 7 tiny pebbles at that spot. And at another spot, Hazrat Ismail alayhi had a whispering from shaitan that don't let your father do this. You're only 10 years old. How can he do this to you? You have to rebel. You have to go against your father. But Ismail alayhi salam didn't listen. And what he did, he picked up 7 pebbles and he threw them at the spot where the whisperings of shaitan came to him. और इस्माइल अलैहिस्सलाम के दिल में भी शैतान ने वसवसा डाला कि ये क्या बात हुई, आप तो सिर्फ 10 साल के हैं, ये कोई हुक्म मानने की बात नहीं है, कैसे आप अपने ज़बा करवाओगे अपने आप को. सो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी 7 कंकड़ियाँ उठाई और वहाँ मारी जहाँ इनको ये वसवसा आया था. अब ये चलते रहे तो तीसरी जगह पे हज़रत हाजर को वसवसा आ रहा है कि हज़रत हाजर तू कैसी माँ है, तू कैसे अपने बेटे को ज़िबा करवाने जाने देती हैं. And Hazrat Hajar had the same waswasas from Shaitan. Now he couldn't attack Hazrat Ibrahim alayhi. It didn't work on them. It didn't work on Hazrat Ismail alayhi salam. So now what he's trying to do is attack, whisper to Hazrat Hajar and make her weak in her iman. But Hajar was very strong in her iman as well, so she did the same thing. Now these stones, the pillars, they weren't pillars before, but these are pillars just to let us know where the whisperings of shaitan came. And these are called Ramial Jamarat.
You must have heard of the word jamarat. Is one of the acts of ibadah in Hajj. You have to stone these 3 pillars in Jamarat. That place is called Jamarat. And remember, what waswasas, what whisperings do we have from shaitan? So this is just a symbol, but the real stoning that we have to do is against our own nafs, our own desires. When our desires say, when we're told to pray, when we hear the adhan, but then we become lazy. So we are just symbolizing that we have to stone our own nafs. We have to hit it and say, no, I'm not going to listen to the whisperings of shaitan. I'm going to listen to the call of prayer, and I'm going to go and pray. Whether you hear the azan or whether it's your parents telling you, चाहे वो अजान के जरिया हो, चाहे वो आपके अम्मी अबू आपको कह रहे हैं कि बेटा बेटी उठो, नमाज का वक्त है, जाके नमाज पढ़ो, तो आपने ये नहीं कहना कि नहीं अभी ये काम कर लूं, क्योंकि वो तो शैतान आपके दिल में बात डाल रहा है ना। हम कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं, जब अल्लाह का हुक्म मानने जाते हैं, तो शैतान हमें रोकने की कोशिश करता है। So we have to fight against that nafs. Okay, so make sure that inshallah, we make dua that we're going to fight against that nafs. And one of the ways to do that is to recite A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Okay, now let's carry on. Now, what happened, alhamdulillah, that when Hadhrat Ismail alayhi salam was about to be slaughtered, Hadhrat Ibrahim alayhi salam put a blindfold on Hadhrat Ismail alayhi salam and himself, so that he wouldn't come over with emotion. So he put a blindfold on himself and on Hadhrat Ismail alayhi salam, and he had placed the knife on Hadhrat Ismail alayhi salam's throat, was just about to slaughter him. But Allah does not leave his beloved slaves alone. He tests them, and then right at the end, he takes us out and gives us something better. So Allah subhanahu wa ta'ala revealed this ayah. And when they had both submitted, and he, Ibrahim alayhi salam, had laid Ismail alayhi salam on his forehead, we called to him, O Ibrahim, you have fulfilled the vision. Indeed, in this way we reward the doers of good. Indeed, this was certainly the clear trial, and we ransomed him with a great sacrifice, and we left for him favorable mention among later generations. Peace upon Ibrahim alayhi salam. So see that, children, देखें आपने कि अल्लाह ने कैसे इनको अजर दिया, और वो कैसे आज तक क़यामत तक के लिए, जब तक लोग हज करते रहेंगे और जब तक मोमिन बंदे जिंदा होंगे, हम इनकी ये सुन्नत को फॉलो करेंगे। किस तरह? कुर्बानी की शक्ल में। हम ईद अल अदा मनाते हैं ना, तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को याद करते हैं हम, कि कैसे अल्लाह ने इनको आजमाया था, और हमारी भी आजमाइशें आती रहती हैं। तो ये हम अपने नफ्स की कुर्बानी करें। We sacrifice our desires for the sake of Allah. This was the message in today's lesson. आज का ये पैगाम है आपके आज के लेसन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पसंद आया होगा। और जो स्लाइड इससे पहले आई थी, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है सूरह सफ़ात में आयत नंबर 103 से लेके 109 तक, वो आपने मुझे उर्दू में बताना है। ठीक है, चाहे आप कमेंट्स में लिख के बताएं, चाहे मुझे मैसेज करके बताएं, और चाहे तो आप ऑडियो करके मुझे सुनाएं। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेसन पसंद आया होगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह हमें इस बात की तौफीक दे कि जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये बात करके दिखाया, हुक्म मान कर दिखाया कि अपने ख्वाहिशात नफ्स को इन्होंने कुर्बान कर डाली, इसी तरह हम भी अपने ख्वाहिशों को कुर्बान कर डालें अल्लाह की खातिर।
that we also learn a lesson from this, and that may Allah grant us the ability to sacrifice our desires, whatever they may be. We all know our weaknesses, so Allah grant us the ability to sacrifice and overcome our weaknesses. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.